Hello and welcome to NDL2 called Lockdown Lecture 2. In a previous lecture, we have studied about acid and base, their classification, their operational definition, also studied as an additional topic Arrhenius, Laurie Bronsted and Lewis acid base theory. The conclusion or summary of the last lecture is acids are those substances which can produce H plus ion, bases are those substances which can produce OH minus ion, but we know that H plus ion is not stable. This H plus readily combines with H2O to produce H3O plus. H3O plus is known as hydronium ion, OH minus is known as hydroxyl ion, etc. etc. Today we'll discuss the topics given in our textbook as a chemical property labeled as topic 2.1 chemical property for acids and bases. Chemical properties of acid and base contains six subtopics 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 and 2.1.6. Today we'll start topic 2.1 as a chemical property given in your textbook as a chemical properties shown by acid and bases. 2.1 chemical properties of acids and base. In our everyday life, we are using many acidic and basic substances as food, as preservatives, as antacids. बहुत सी बार आप बहुत स्पाइसी खाना खा लेते हो और एसिडिटी होती है, तो क्योर दिस एसिडिटी आप क्या यूज कर सकते हो? इनो, बुलबुले, झट से आराम वगैरह वगैरह. सो दिस सब्सटेंस जो आप यूज कर रहे हो इनो की तरह, उसमें जनरली होता है बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा जो है बेस, आपकी बॉडी के अंदर जो एसिडिटी क्रिएट हुई है वो बेस से उसको क्या किया जाता है? न्यूट्रलाइज किया जाता है. सो ऐसे बहुत से प्रोसेस है जहां पर एसिड और बेस की इंपॉर्टेंस. ये एसिड और बेस को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो थ्रू डिफरेंट मैनर्स, और उसमें से एक है हाउ टू रिकॉग्नाइज एसिड एंड बेस इन लैबोरेटरी. इट्स अ टॉपिक नंबर 2.1.1 2.1.1 acids and bases in laboratory. We have different parameters for the recognition of acid and bases. The first one, the simple one that you always know, it's through litmus test. For a litmus test, we can have a litmus solution. In the market, red litmus, blue litmus solution is also available. Along with the litmus solution, we are also having litmus paper, blue litmus paper, red litmus paper, etc. for recognizing acid and base. Along with the litmus test, we can have a pH paper test or pH solution. We'll discuss this in a later part of this chapter in a topic of pH. P means potence and H means H. Potence of H. Potence means capacity, but we'll discuss it later. Here we are discussing how to recognize acid and base in laboratory. We have different tests called litmus test, pH test. We can also have a pH meter for calculating the acidic or basic character. Along with the litmus and pH test, we are also having indicators. Universal indicator, pH universal indicator. Indicator is a chemical which shows acidic or a basic character of a given solution, indicating change in color. Or by providing change in color, indicators provides the information about the given solution, whether it is acidic or a basic. Universal indicator. Or methyl orange or phenolphthalein as an indicator. We can have different type of indicators for the recognition of acid and base. आज मेरे पास भी आपके लिए कुछ सरप्राइजेस है. मैं
मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथालीन वगैरह अरेंज कर चुका हूं। आज आपको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू ये टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा। वी नो दैट वाटर कैन एक्ट एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस, बट प्योर वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। प्योर वाटर, ध्यान से सुनो, प्योर वाटर, प्योर, when it is pure it is neutral in nature, not having any character, acid or base, no, it's a neutral substance. I'm having water in a beaker and another empty beaker we are having. I transfer some amount of water hoping कि ये प्योर वाटर है। इसके अलावा मेरे पास दो इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर इन फॉर्म ऑफ अ फिनोल्फथैलीन। अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे लिखा होगा फिनोल्फथैलीन सॉल्यूशन, इट्स एन इंडिकेटर बॉटल which contains indicator, also having another indicator in form of a methyl orange solution, methyl orange। ये दो इंडिकेटर्स है जो यूज होते हैं फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एसिड बेस। रादर मैं ये कह सकता हूं ये दोनों इंडिकेटर यूज होते हैं फॉर टाइट्रेशन। टाइट्रेशन मींस न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड या बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हुआ है नहीं एक दूसरे के इस्तेमाल से, वो हम जान सकते हैं बाय यूजिंग दिस टू इंडिकेटर, फिनोल्फथालीन एंड मिथाइल ऑरेंज। डिफरेंट कलर्स ये प्रोवाइड करेंगे विद सर्टेन सॉल्यूशंस, और उससे हम पता लगा सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने प्योर वाटर ट्रांसफर किया था एक छोटे से बीकर में। मेरे पास अभी टेस्ट ट्यूब अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन कंडीशन, तो जो भी है उससे हम थोड़ा बहुत डेमोन्स्ट्रेशन आपको समझा रहे हैं। आप देख सकते हो ये कलरलेस सॉल्यूशन है, बट इट्स अ वाटर, कलरलेस सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ वाटर वी आर हैविंग। अगर मैं इसमें फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर ऐड कर रहा हूं, फिनोल्फथैलीन, वाटर जो है वो एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, सो बाय एडिंग अ फिनोल्फथैलीन कोई कलर चेंज होने वाला नहीं है। इंडिकेटर 2 ड्रॉप ही चाहिए, ज्यादा यूज करना नहीं है। You can observe no change in color for the given solution because it's a pure water and pure water is neutral in nature. लेकिन अगर इसके अंदर मैं सॉल्यूशन डाल देता हूं कॉल्ड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप देख सकते हो लेबल किया गया है NaOH, इट्स अ बेस कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सपोज आई एड some amount of sodium hydroxide to the solution, check the change in color of the solution. By adding only 1 or 2 drop, it changes to pink in color. What it indicates? Now the substance or the solution becomes basic in nature, and NaOH is a base which provides pink color, with the phenolphthalein, with the phenolphthalein indicator. Base NaOH provides pink color with the phenolphthalein indicator. Here it indicates that a given solution contains a base called NaOH. अब जादू, दूसरी बात, जादू। We have a bottle having HCl, hydrochloric acid. It's a diluted HCl, correct? Now addition of some amount of HCl. Check the color, huh? It gets disappeared. ये कोई मैजिक नहीं है, इट्स प्योर केमिस्ट्री। बाय एडिशन ऑफ HCl वी हैव न्यूट्रलाइज्ड द बेस। जो NaOH हमने ऐड किया था वो अब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका है बाय द एडिशन ऑफ HCl। सो इसीलिए वो कलर जो है वो क्या हो गया, डिसअपीयर। ये है एसिड बेस इंडिकेटर फिनोल्फथैलीन का इस्तेमाल। फिनोल्फथैलीन के अलावा मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर भी है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज होता है फॉर एसिडिक सॉल्यूशंस। हमारे पास एक और बॉटल है मिथाइल ऑरेंज की, बट ऑब्वियस नाम के जैसे ये ऑरेंज कलर का इंडिकेटर है।
एट प्रेजेंट यहां पर ये जो सॉल्यूशन था हमारे पास, उसमें पहले पानी था, पानी में हमने ऐड किया था फिनोल्फिनीन सॉल्यूशन, नो चेंज इन कलर, फिर डाला बेस पिंक कलर, क्योंकि फिनोल्फिनीन बेस के साथ पिंक कलर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया बाय एडिशन ऑफ एसिड। अब इसमें एसिड ज्यादा है कंपेयर टू बेस। अब इसमें हम इंडिकेटर के तौर पर यूज कर सकते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनली ऑरेंज कलर का है, लेकिन एसिड के साथ वो थोड़ा सा रेडिश कलर प्रोवाइड कर रहा है। ये है मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर, रेडिश पिंक जैसा कलर है। इसको भी हम अब NaOH से डिकलराइज करेंगे, बिकॉज ये एसिडिक कैरेक्टर है, एसिडिक बिहेवियर है। अब बेस डालने से उसको क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। देख सकते हो कलर धीरे धीरे फेड हो रहा है, जो डार्क ऑरेंज कलर था वो लाइट ऑरेंज से पिंक की ओर कन्वर्ट होता जाएगा, येलोइश कन्वर्जन देखने को आपको मिलेगा, येलोइश। ये है एसिड बेस इंडिकेशन बाय यूजिंग मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथेलिन। मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन के अलावा हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है। इसके अलावा एक लिटमस सॉल्यूशन आता है, न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन, जो पर्पलिश कलर का होता है। इसके अलावा हमारे पास पीएच पेपर, पीएच सॉल्यूशन, पीएच मीटर है, जो हम एसिड और बेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। इट्स अ टॉपिक, एसिड एंड बेस इन आवर लेबोरेटरी, हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज एसिड और बेस बाय यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट्स। टेबल दिया है एक्सरसाइज के अंदर, एक एक्टिविटी के अंदर। आपके घर में जो डिफरेंट कंपाउंड्स है उसको आप क्लासीफाई कर सकते हो। टेमेरिंड है, इमली, इसके अलावा विनेगर है, ये सब एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। आपके घर में जो सोप आप इस्तेमाल कर रहे हो या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रहे हो, ये बेसिक सब्सटेंसेस है। तो ये तरीके से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो एसिड और बेसिस को बाय यूजिंग द लेबोरेटरी रिएजेंट्स। द नेक्स्ट टॉपिक which is labeled as 2.1.2 in your textbook is a reactivity or how acid and base reacts with metal. We'll discuss the next topic, reactivity of acid and base with metals. Let's see. It's 2.2. It's 2.1.2. How acids and bases reacts with metals. एक डायग्राम के थ्रू आपको एक एक्सप्लेनेशन दी गई है। भाई एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर थोड़े बहुत जिंक ग्रेन्यूल्स, Zn, जिंक मेटल के ग्रेन्यूल्स ले लिए जाए। Zn ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे बॉल्स जिंक के, और उसके अंदर थीसल फनेल के थ्रू एसिड ऐड कर दिया जाए। एसिड ड्रॉप वाइज एसिड, कोई भी एसिड आप यूज कर सकते हो, HCl और H2SO4। बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल विथ एसिड एक गैस लिबरेट होगी। ये गैस को आप ऑब्टेन कर सकते हो थ्रू द डिलीवरी ट्यूब। ये डिलीवरी ट्यूब को आपको एक एपरेटस में लेना है जहां पर सोप सॉल्यूशन है। जो प्रोड्यूस हो रही गैस है वो सोप सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होगी, और उसमें से हम जानते हैं बबल्स निकलेंगे। बबल्स, आपने सोप के बबल्स बनाए हुए पाउडर के, यस। ये बबल्स को जब बर्निंग मैचस्टिक के साथ बर्न किया जाएगा, दे बर्न विद अ पॉपिंग साउंड and indicates the presence of H2 gas। तो ये तरीके से कोई भी एसिड या बेस जब भी कोई मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। और इन अ जनरल इक्वेशन वी कैन से दैट एसिड प्लस मेटल
releases salt plus hydrogen gas. Acid like HCl, metal like zinc reacting with HCl to produce zinc chloride ZnCl2 along with hydrogen gas. For the balancing, I'll put 2x. Instead of HCl, we can use H2SO4 reacting with zinc to produce ZnSO4 plus H2. So in this way, salt and hydrogen gas produced by this reaction. It's a property 2.1.2, how acid and base reacts with metal. Example of acid reacting with metal. Next, you can put another reaction called base like NaOH reacting with metal zinc to produce a compound called sodium zincate ZnO2, Na2ZnO2 along with hydrogen gas H2 gas. The same reaction, base reacting with metal to produce metal salt plus hydrogen. In short, property 2.1.2 indicates that acid or base any when reacting with metal they produces hydrogen gas. Given as a 2.1.2 in your textbook with some activity given demonstrated over here by using or trying to use this drawing this diagram. The next property labeled as 2.1.3. I'll explain, but just note down these reactions as a property number 2.1.2, how acid and base reacts with metals. The next property labeled as 2.1.3, that how metal carbonates and hydrogen carbonates reacts with acid. How metal carbonates and metal hydrogen carbonates and metal hydrogen carbonates reacts with acid. Let's discuss how hydrogen carbonates or carbonates reacts with acid. For this, we'll take an example of sodium carbonate called Nat2O3. What it is? Nat2O3, sodium carbonate. When this sodium carbonate reacts with HCl called hydrochloric acid, producing NaCl as a salt along with H2O and CO2, carbon dioxide releases by this type of reaction. For balancing, I'll put 2 NaCl, 2 HCl. So we have carbon dioxide gas as a product when acid reacts with carbonate. If you use hydrogen carbonate, NaHCO3 with HCl, the product will be the same, NaCl plus H2O and CO2. So in both the reaction, we'll get carbon dioxide gas as a product. But carbon dioxide is a colorless gas. How can we detect the presence of carbon dioxide produced during this reaction? If we perform this reaction in a closed vessel and a gas coming out of the vessel is passing through slack line. Slack line, we know that it's calcium hydroxide, CaOH twice. When CaOH twice reacting with CO2, it gets precipitated in form of a calcium carbonate, CaCO3. Calcium carbonate gets precipitated when CaOH twice reacting with CO2. The white PBDs of a CaCO3 indicates the presence of
carbon dioxide, presence of carbon dioxide releasing when metal carbonates or metal hydrogen carbonate reacts with acid. Along with water, H2O. But if excess amount of carbon dioxide pass through the white PPT, this white PPT gets dissolved and converted into the calcium hydrogen carbonate, which is soluble. Salt means the curd or white PPTs gets disappear if excess of CO2 is passing through. It's a third property given in your textbook, how metal carbonates and metal hydrogen carbonates reacts with an acid. When metal carbonate or metal hydrogen carbonate reacts with an acid, they produce salt, water and carbon dioxide. How can we detect the produced gas is carbon dioxide? For the detection of carbon dioxide, famous reaction, we know that when carbon dioxide is passed through the slack line, chune ka pani. This slack line absorbs the carbon dioxide and produces CaCO3, which in form of a white PPT is obtained at the end of the reaction, indicates the presence of CO2. But if we pass excess of carbon dioxide through this solution, the insoluble white CaCO3 changes to CHCO3, becomes soluble, and the white PPTs gets disappear. Note down these reactions as a property number 3 given in your textbook. The next topic, labeled as 2.1.4, how acid and base reacts with each other. We know that acid and base reacts to produce salt and water is the simple property for acid and base, labeled as 2.1.4, how acids and bases reacts with each other. Simple, acid reacts with base to produce salt and water. HCl reacting with NaOH to produce NaCl and H2O. H2SO4 reacting with KOH to produce K2SO4 plus H2O. So it's a property of acid and base that they react with each other to produce salt and water, simple one. The next property is a 2.1.5, how acid reacts with or metallic oxide, reaction of acid with metallic oxide. 2.1.5, reaction of acid with metallic oxide. Acid like HCl reacts with metallic oxide like Nat2O. Nat2O is called sodium oxide, again to produce salt and water. The reason is Na2O is basic in nature. Metallic oxides, they are basic in nature. How we can say that metallic oxides are basic in nature? Because when metallic oxides dissolve in water, they produces hydroxide. Hydroxide, OH containing substance. They are also known as alkalis. OH containing substances are known as alkalis. They are basic in nature, base. When HCl reacting with metallic oxide like sodium oxide, Na2O, it produces salt
NaCl and water, because it's basically a reaction of acid with the base. Similarly, in 2.1.6 we have a topic that a reaction of base with non-metallic oxide, same thing, when base reacts with non-metallic oxide, they produces salt and water. As I mentioned, metallic oxides, they are basic in nature, then non-metallic oxides, they are acidic in nature. So basically it becomes a reaction between base and acid. So base and acid reacts to produce salt and water. It's your property number 6. Here we conclude all the properties for the acid and base in form of a 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 1.4, 1.5 and 1.6. After this property, we have additional topic in form of a 2.2, which indicates how acid and base, they are able to conduct electricity. Conduction of electricity through acid and bases. Acid and base, when dissolved in water, they furnishes H plus ion and OH minus ion. Or rather we can say that they produces different type of cations and anions. In your textbook topic 2.2, they have mentioned that different acids which undergo complete ionization or different bases which undergo complete ionization, they are able to conduct electricity. A diagram has been given, a cell has been set up in which 2 electrodes dipped into this different solution of acid and bases. A bulb is over there. Whether the bulb will glow or not, a question is there for a different acids or base. Those acids which undergo complete ionization, which furnishes free ions, cations or anions. You know that cations and anions are responsible for the conduction of electricity. So for the conduction of electricity, we need cations and anions. Those acid and base which undergo complete ionization or furnishes large amount of cations and anions, they are able to conduct electricity. Those who are able to conduct electricity, the bulb will glow in that cases. Glucose containing H, because the formula of glucose is 6H12O6. Fructose containing 6H12O6. Having H, but still they will not glow the bulb. The reason is they do not undergo complete ionization. उनके अंदर ionization possible नहीं है. Or ions, free ions are responsible for the conduction of electricity. So when acid and base, they dissolve in water or their aqueous solution or their molten solution is prepared, they become good conductor of electricity when they undergo complete ionization. It's your topic 2.2. After the topic 2.2, we have some questions 1, 2, 3, 4, 5, 6 given in your textbook. We'll try to explain these questions. He will help us to read it out those questions one by one, and then I'll explain the answer related to those questions. Why do hydrochloric acid and nitric acid show acidic characters in aqueous solutions, while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? He has read it out the first question. I'll request her to again read the same question. Question number one again. Why do hydrochloric acid and nitric acid show acidic characters in aqueous solutions, while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? Correct. While HCl and HNO3 shows acidic character when dissolved in water, glucose, so 6H12O6, alcohol like ethanol, CH3, CH2OH, they are not able to show, not showing acidic characters. The reason is simple, as I already mentioned. For acidic weak character, we need to furnish H3O plus ion. When HCl dissolved in water, H2O, it undergoes complete ionization. This H plus combines with the H2O to produce H3O plus and Cl minus. Similarly, for HNO3, when dissolved in water, this H plus combining with the H2O to produce H3O plus and NO3 minus.
the formation of H3O plus when HCl and HNO3 dissolved in water makes them acidic. But when glucose added C6H12O6 to water, it only furnishes C6H12O6 solid to aqueous. That means only aqueous solution of glucose is obtained. No ionization occur, no formation of H3O plus ion. That's why glucose, alcohol, they are not showing acidic character when they are dissolved in water, but HCl and HNO3 they can produce acid because they furnishes H3O plus ion. Glucose is not able to furnish H3O plus ion. Only solid form of glucose changes to the aqueous glucose, and that's why not having H plus ion, so not showing any acidic character. It's your answer for the question number 1. Write down both the reactions. Requesting Abe to read out the second question. Number 2. Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? Question number 2. Why aqueous solution of an acid conduct electricity? In non-aqueous form, HCl, HNO3, they are not having free ions. We know that free ions are required for the conduction of electricity. कोई भी electricity conduction के लिए आपको free ions या free electrons चाहिए. Free ions are not there when HCl, HNO3 are in non-aqueous form. But when they are dissolved in water, the HCl changes to HCl aqueous. Aqueous मतलब aqueous means dissolved in water, aqueous form. In this aqueous form, it is present in form of H plus and Cl minus. They are having free ions, and free ions are comfortable, or the free ions are responsible for the conduction of electricity, and that's why HCl and HNO3 in their aqueous form only conduct electricity. Thank you. Write down this question, and I'll request you again to read out the third one. Number 3. Why does dry hydrochloric gas not change the color of dry litmus paper? Question number 3. It's why does dry litmus paper not able to change color of, why does Dry hydrochloric gas dry HCl gas not able to change the color of dry litmus paper. litmus paper? Dry HCl gas, gaseous form, dry form, not having H3O plus ion responsible for acidic character. For acidic character, we need H3O plus ion formation. But when HCl is present in a gaseous state, it is a dry gaseous state, no H3O plus ion is formed, and that's why it will not affect the dry litmus paper. To observe the change, rather we have to prepare the aqueous solution of HCl and the litmus paper should be dipped into it, or we have to use a moist litmus paper instead of a dry. Instead of using dry, if we use moist litmus paper, this moisture ionizes HCl to furnish H3O plus ion and a Cl minus ion. That's why the presence of H3O plus ion will change the color of litmus paper, and that's why
Dry HCl or dry litmus paper will not show change in color. We need moist litmus paper or aqueous solution of HCl to observe the change in color. It's your answer for question number 3. Note it down. Here, please read out question number 4. Number 4. While diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? It's a good question. बहुत से लोग जब बड़े होके कोई लैब में काम कर रहे होते हैं वहां पर भी गलती कर देते हैं एट द टाइम ऑफ डाइल्यूशन. अगर आप एसिड को डाइल्यूट करना चाहते हो, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में पानी ऐड नहीं करना है. आपको पानी में कांस्टेंट स्टरिंग से स्लोली एसिड को ऐड करना है. इट्स नॉट सिमिलर दैट आप शरबत में पानी डालो या पानी में शरबत, दोनों सेम है. ये लेबोरेटरी के अंदर डाइल्यूशन प्रोसेस की बात चल रही है. हाउ वी कैन प्रॉपरली डाइल्यूट एन एसिड? फर्स्ट, टेक वाटर in apparatus. एक apparatus में आप क्या ले लो? पहले पानी, water, and then slowly add acid by constant stirring. स्टर करते करते आपको वाटर के अंदर एसिड डालना है. एसिड के अंदर वाटर डाल सकते हैं? नहीं है. इफ यू आर टेकिंग एसिड एंड देन एडिंग वाटर, नॉट इन प्रैक्टिस. ये गलत है, आपको ये काम करना नहीं है. द रीजन बिहाइंड इट, जब आप एसिड को डाइल्यूट करने के टाइम पर वाटर ऐड करोगे, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. Exothermic reaction. Exothermic reaction means a large amount of energy releases during the reaction. Large amount of energy released during this reaction will explode this apparatus. Explode the apparatus because the large amount of heat cannot be absorbed by any of the material present, and that's why that heat should be absorbed by the glass apparatus. This glass apparatus cannot resist this type of heat, and that's why it gets exploded and आपको problem हो सकती है. So a proper way to dilute the acid is by adding acid slowly to the water, not adding a water to the acid. Most important thing, keep it in your mind. It's your question number 5, I think. Okay. No, it's 4-1. Correction from here. It's your question number 4. I request to read the next question, question number 5. Number 5. How is the concentration of hydronium ions affected when a solution of an acid is diluted? Okay. How Is the concentration of H3O plus ion affected when a solution of an acid is diluted? Solution of acid is diluted. ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो एक बहुत डिटेल स्टडी से डेवलप होता है, कॉल्ड ली शेटेलियर्स प्रिंसिपल, जो आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे. लेकिन वहां तक नहीं जा रहे हैं, बट विल आंसर इट इन अ सिंपल मैनर कि भाई आप जब HCl को पानी में डिसॉल्व कर रहे थे, H2O पानी में डिसॉल्व कर दिया, आपको पता है कि ये H+ आयन H2 के साथ कंबाइन होकर क्या बना देता है? H3O+ और बाद में Cl-. ये कंप्लीट आयोनाइजेशन हो चुका है एसिड के लिए, H3O+ एंड Cl- आयन का.
ये आयोनाइजेशन अमाउंट ऑफ H2O पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ H2O। एसिड में आप पानी को कितने प्रोपोर्शन में मिक्स कर रहे हो, पानी में एसिड कितने प्रोपोर्शन में मिक्स कर रहे हो, कितने पानी में कितना एसिड मिक्स कर रहे हो, उस पर ये एसिड का आयोनाइजेशन। अगर आप और पानी ऐड करते जाओगे तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट होते जाएंगे H+ और H2O के फॉर्म में, और ये प्रोड्यूस्ड जो H+ आयन है वो वापस H2O के साथ कंबाइन होके H3O+ का फॉर्मेशन करता रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप जितना पानी डालते जाओगे एसिड में उतना ही हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, H3O+ का प्रोपोर्शन बढ़ता जाएगा। So with dilution of an acid, you can say that the proportion of H3O+ ion increases. The proportion of H3O+ ion increases because ionization of H2O taking place. Thank you. It's a question that given those are given in your textbook. I think one more question is remaining. We'll discuss in the next lecture because we have a time limit for the lecture recording. So we'll discuss it in the next lecture. Thank you.